हेलो गाइज। तो आज नया एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ बीएससी नर्सिंग का। तो ये सब एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है एंड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहाँ से ये सब क्वेश्चन उठाया है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन इज वर्क इज सेड टू बी जीरो ऑप्शन दिया हुआ है। तो वर्क इक्वल टू एफ डी कोस्टीटा। तो अगर फोर्स अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जूल। SI unit of work is joule and 1 joule equal to 1 Nm. Next question is kinetic energy of a body becomes 4 times. Kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value. What happens to its velocity? So kinetic energy becomes 4 times. Kinetic energy directly proportional to b square. तो इफ़ काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स है तो b इक्वल्स टू √4 इंटू इनिशियल वेलोसिटी b स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी। तो ऑप्शन डबल हो जाएगा 2 इंटू IB। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट डबल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू। व्हाट हैपेंस टू इट्स वेलोसिटी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the work done in lifting of a 2 kg object to a height of 5 meters? What is the work done in lifting a 2 kg object to a height of 5 meters? Take g equal to 10 meter per second square. तो इसको अगर लगे वर्क इक्वल टू mgh। तो मास दिया हुआ है 2 kg एंड जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू एच का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 5। तो कितना आएगा 50 इंटू 2 तो 100 आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो क्वेश्चन में बोला है ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑप्शन दिया हुआ है एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजिशन, ऑलवेज जीरो, कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजिशन। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a spring with a spring constant K is compressed by X. Its potential energy is, तो elastic potential energy is half kx square. Option A is correct. A spring with spring constant K is compressed by X. Its potential energy is, तो elastic potential energy equal to half kx square. Option A is correct. Next question is mechanical energy is conserved when? Mechanical energy is conserved when ऑप्शन दिया हुआ है ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट, एनर्जी इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड एंड फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड in presence of conservative forces only, for example gravity. Next question is power is defined as, power का
कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है वर्क पर यूनिट फोर्स, वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस। तो पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो ऑप्शन वर्क पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI unit of power, SI unit of power is watt, option B is correct, watt. SI unit of power is watt. Next question is what is the power of a man, what is the power of a man who does 300 joule of work in 10 seconds? So what is the power of a man who does 300 joule of work in 10 seconds? तो पहले भी बोला है पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम, तो 300 जूल W एंड टाइम 10 सेकेंड, तो आएगा 30 W, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन, तो ऑप्शन दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन इलास्टिक कोलिजन both energy, both kinetic energy and momentum are conserved, तो momentum is not conserved वाला है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, kinetic energy and both kinetic energy and momentum are conserved। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kepler's first law states, Kepler's first law states, ऑप्शन दिया हुआ है planets move in circular orbits, planets move in elliptical orbits, planets move at constant speed, planets stop at perihelion। तो ऑप्शन अगर Kepler's first law states that elliptical orbits sun at one focus, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, elliptical orbits sun at one focus, planets move in elliptical orbits, option B is correct। Next question is universal law of gravitation, तो universal law of gravitation means Newton's law, Newton's law F equal to G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसमें देखें अगर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू इज, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यही करेक्ट है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज, ऑप्शन दिया हुआ है 10, 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिपेंड्स ऑन मास, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ एल्टीट्यूड बोथ नीदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ, जी डिक्रीजेस विथ बिलो एंड अबव अर्थ सरफेस, नीचे जाओ और ऊपर भी जाओ ग्रेविटी डिक्रीज होता ही रहेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू masses m1 and m2 is, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू masses m1 and m2 is, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं आर, U इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज escape speed is independent of, question 19, escape speed is independent of mass of the body, radius of the planet, mass of the planet, gravitational constant, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मास ऑफ द बॉडी। तो escape speed इक्वल टू रोडो बार ट्वाइस gm डिवाइडेड बाई आर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, escape of speed is independent of mass of the body, independent of mass of object, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज satellite in circular orbit experiences gravitational force only, no force, electric force, centrifugal force only, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, satellite in circular orbit experiences, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली।
तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल एनर्जी, total energy of a satellite in circular orbit is, total energy of a satellite in circular orbit is positive, 0, negative, infinite। ऑप्शन सी इज करेक्ट, निगेटिव। टोटल एनर्जी को देखें अगर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर, तो निगेटिव इज करेक्ट। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज time period of a satellite depends on, time period of a satellite depends on its mass only, radius of orbit, gravitational potential, acceleration due to gravity। time period of a satellite depends on t directly proportional to r to the power 3/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच लेस देन डबल लेस देन आर इज, तो वैल्यू ऑफ जी equal to g into 1 minus h by r, option C is correct। next question is for a planet if distance is double, for a planet if distance is double the gravitational force becomes, the gravitational force become, if for a planet if distance is double the gravitational force becomes, so f directly proportional to 1 by r square, option B is correct, 1/4। For a planet if distance is double, यहाँ अगर टू किया जाए तो डबल, द ग्रेविटेशन फोर्स बिकम्स 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, कांस्टेंट, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। तो इन सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन, मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का है 90 डिग्री, तो वर्क विल बी 0। सर्कुलर मोशन में एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क विल बी 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन फिजिक्स का, एंड नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन को। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है according to the Cossel-Lewis approach, atoms from chemical bonds is 2। According to Cossel-Lewis approach, atoms from chemical bonds 2। ऑप्शन दिया हुआ increase energy, achieve noble gas configuration, become more reactive, gain electrons only। ऑप्शन बी is correct, achieve noble gas configuration। According to the Cossel-Lewis approach, atoms from chemical bonds to achieve noble gas configuration। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of ionic bond, तो कौन सा ऑप्शन में से कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, तो ऑप्शन दिया हुआ है H2O, CH4, NaCl, O2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, NaCl। तो सोडियम जो है ये मेटल है एंड Cl जो है ये नॉन मेटल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए O2 molecule is, bond order of O2 molecule is, तो bond order from molecular orbital theory 8 - 4 divided by 2, इसको अगर लेके तो आएगा 4 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2। bond order of oxygen molecule is O2। next question is which one has the highest bond length, which one has the highest bond length, triple bond, double, single, all, same। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल इन H2O अकॉर्डिंग टू BSE PR theory, bond angle in H2O according to BSE PR theory is 90 degree, 104.5 degree, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
Bond angle in H2O according to BS-EPR theory is 104.5 degree. तो ड्यू टू H2O का जो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, तो 104.5 डिग्री ऑफ वाटर इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following molecule is linear in shape? Which of the following molecules is linear in shape? ऑप्शन दिया हुआ है CH4, H2O, CO2, NH3. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, CO2. CO2 is linear due to equal bond pairs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका जो सी बोला है ना CO2, तो इसका जो है सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो CO2 इज लीनियर ड्यू टू इक्वल बॉन्ड पेयर्स एंड सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज, तो CH4 के पास है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट. CH4 के पास है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H2 एसिटाइलिन इज. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन एसिटाइलिन इज, तो ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 2 पाई. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 सिग्मा एंड 2 पाई. 3 सिग्मा एंड 2 पाई. इसको अगर लेके ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, टोटल 3 सिग्मा, तो 2 CH सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन बॉन्ड 1 कार्बन बॉन्ड एंड 2 पाई, तो टोटल 3 है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैप इज. ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैप इज, ऑप्शन दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाई बॉन्ड. तो पाई बॉन्ड जो है ये फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which molecule is paramagnetic according to MO theory. तो N2O2 F2 H2. ऑप्शन बी इज करेक्ट, O2. O2 के पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 5 सिग्मा ऑर्बिटल्स, पैरामैग्नेटिक. ऑप्शन बी इज करेक्ट, O2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following involves hydrogen bonding? HCl, CH4, NH3, CO2. Option C is correct, NH3. NH3 has H bonding due to NH bonds and a lone pair on N. Next question is in NH3 the hybridization of nitrogen is. sp, sp2, sp3. तो NH3 के पास 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर, तो ऑप्शन sp3, ऑप्शन सी इज करेक्ट. NH3 के पास 3 बॉन्ड पेयर है एंड प्लस 1 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 इज. तो BF3 हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए thermodynamic system in which matter and energy can be exchanged is closed system, isolated system, open system, adiabatic system. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओपन सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ मैटर एंड एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following is a state function? Which of the following is a state function? Work, heat, internal energy, path. Option C is correct. Internal energy. Internal energy depends only on initial and final states. Next question is SI unit of heat is calorie, Kelvin. So SI unit of heat means SI unit of energy or heat is joule. Option C is correct. Next question is, if work is done on the system, it is taken as. If work is done on the system, it is taken as. So work done on the system is positive. Option A is correct. Next question is, delta H is equal to delta U when? So option, at constant volume no work done is done. So delta H equal to delta U. At constant volume no work done is done. So option B is correct. At constant volume no work done is done. Delta H equal to delta U. Next question is, in an endothermic reaction, heat is released, absorbed, constant, not involved. Option B is correct. Absorbed. Endothermic reaction absorb heat. Delta H greater than 0. In an endothermic reaction, endothermic reaction absorb heat. Option B is correct. Next question is, enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेसिस. तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसको अगर डेल्टा एच लेस देन 0 इसको अगर लेके तो आएगा -57.1 kg/mol. तो निगेटिव आया. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, निगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a reaction is spontaneous if a reaction is spontaneous if so gives free energy delta G must be negative. For a reaction is spontaneous if option B is correct. Delta G must be negative, delta G less than 0. Option B is correct. Next question is, Gibbs free energy is given by. ये सब क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये सब वैल्यू पूछ देगा. तो गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन बाय जी इक्वल टू एच माइनस टी एस. Which of the following is not a thermodynamic process? Which of the following is not a thermodynamic process? Isothermal, adiabatic, isobaric and photochemical. Option D is correct. Which of the following is not a thermodynamic process? Photochemical reaction ये जो होता है ये डिपेंड ऑन लाइट में होता है, डिपेंड ऑन लाइट, नॉट ऑन थर्मोडायनामिक प्रोसेस और थर्मोडायनामिक पाथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calorimetry is used to measure pressure, volume, enthalpy change, heat capacity only. Option C is correct. Calorimetry is used to measure enthalpy change. Next question is, if Gibbs free energy equal to 0, the system is in equilibrium, expansion, contraction, maximum entropy. Option A is correct. If Gibbs free energy equal to 0, the system is in equilibrium. नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी को. Which of the following is found in prokaryotic cells only? तो prokaryotic cells only ऑप्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज. ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यूक्लियॉइड. तो प्रोकार्योट्स जो है ये लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, so their genetic material lies in nucleate. Option B is correct. Next question is, which organelle is responsible for protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइबोसोम. राइबोसोम is the site of protein synthesis in all cells. Next question is,
Plasmodesmata in plant cell help in cell division, transport of RNA and proteins, storage, DNA replication. Option B is correct. Plasmodesmata in plant cell help in transport of RNA and proteins. Option B is correct. Next question is which structure is absent in animal cell? Which structure is absent in animal cell? तो ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, सेल वॉल. एब्सेंट इन एनिमल सेल तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेल वॉल. एनिमल सेल है जो है एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, ओनली प्लांट सेल के पास सेल वॉल है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर called the powerhouse of the cell because they store energy, they produce ATP, they break down protein, they form vacuoles. Option B is correct. They produce ATP. They produce ATP or generate ATP, adenosine triphosphate. Next question is which of the following is a membrane bound organelle? Which of the following is a membrane bound organelle? Option C is correct, mitochondrion. तो माइटोकॉन्ड्रियन ये डबल मेम्ब्रेन है एंड फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज 70S राइबोसोम? माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई. ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. 70S राइबोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दे हैव देयर ओन राइबोसोम, दे हैव देयर ओन 70S राइबोसोम like prokaryotes. Next question is function of Golgi apparatus is DNA synthesis, protein modification and packaging, energy production, protein translation. So option B is correct. The function of the Golgi apparatus is protein modification and packaging. Next question is lysosomes are rich in हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो लाइसोसोम जो है ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम एंड टू ब्रेक डाउन वेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सेल वॉल डिवीजन इन एनिमल सेल? प्लास्टिड, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस. ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेंट्रियोल. Which of the following helps in cell division in animal cell? Option C is correct, centriole. Next question is which of the following is disaccharide? Option दिया हुआ है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, राइबोज. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुक्रोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज प्रोटीन जो है ये काइंड ऑफ पॉलीमर है एंड पॉलीमर आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड. Option C is correct, amino acid. Next question is which of the following is a fat soluble vitamin? तो fat soluble vitamin is vitamin A, D, E and K. Fat soluble and water soluble is vitamin B complex and C. तो बोला है fat soluble vitamin is तो option C is correct, vitamin A. Next question is which bond is responsible for फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड. रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ए प्रोटीन स्ट्रक्चर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड. ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which test is used to detect reducing sugar? Which test is used to detect reducing sugar? Option A is correct, Benedict's test. Next question is which of the following is a polysaccharide? कौन सा polysaccharide है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिलोलोज ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question is DNA is composed of ऑप्शन दिया हुआ है एमिनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स. ऑप्शन
C is correct, nucleotides. DNA is a polymer of nucleotides. Option C is correct. Next question is, which of the following stores genetic information? Which of the following stores genetic information? Option C is correct, DNA. Deoxyribonucleic acid store or passes genetic information. Next question is, biochemical reaction in living cell are regulated by vitamins, hormones, enzymes. Option C is correct, enzyme. एंजाइम जो है ये एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंजाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन occur? In which phase of cell cycle does DNA replication occur? G1, G2, S, M phase. So option C is correct. Synthesis phase is when DNA is replicated. S phase. Next question is, which of the following is the longest phase of cell cycle? Longest phase of cell cycle. Option D is correct. Interphase. G1 plus S plus G2 is the longest and most active phase. Next question is, mitosis results in 4 haploid cell, 2 diploid identical cell, 1 tetraploidal cell, 2 haploid cell. So option B is correct, 2 diploid identical cell. Mitosis produces 2 genetically identical diploid cell. Option B is correct. Next question is, in which phase of mitosis do chromosome align to the equator, at the equator? Prophase, anaphase, telophase, metaphase. Option D is correct, metaphase. Next question is, meiosis is important for? Meiosis produce genetic variation, so option C is correct. Meiosis is important for genetic variation. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट इज इंग्लिश को देखते हैं. इसमें सिर्फ जो इंग्लिश में सिर्फ 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड स्पेलिंग टेस्ट को दिया गया है. तो नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट आएगा उसमें चेंज करेंगे इस दोनों टॉपिक को. तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ऑप्शन ए इज करेक्ट, थियस्ट. थियस्ट मीन्स एथियस्ट और थियस्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी. तो ऑप्शन दिया हुआ है लेक्सिकोग्राफर, कंपाइलर, एडिटर, पब्लिशर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड. ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डायरी, एबेटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्लॉटर हाउस. ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड या एन एबेटर is a slaughterhouse. Option B is correct. Next question is, a person who looks at the bright side of life. A person who looks at the bright side of life. Realist, optimist, pessimist, cynic. Option B is correct. A person who looks at the bright side of life, optimist. Option B is correct. Next question is, a speech made without preparation. A speech made without preparation तो बोला जाता है extempore. Option C is correct, extempore. A speech made without preparation is extempore. Next question is, a person who talks too much. A person who talks too much. Option C is correct, garrulous. Garrulous means excessively talkative. Next question is, a disease that spreads over a large area. A disease that spreads over a large area. Option D is correct, pandemic. Option D is correct. Next question is, a man who is easily fooled. A man who is easily fooled. Option D, option B is correct, gullible. Gullible means person is easily tricked or deceived. A man who is easily fooled, gullible. Next question is, a thing that is fit to be eaten. A thing that is fit to be eaten, edible, audible, feasible and eligible. Option A is correct, edible. A thing that is fit to be eaten, edible. Next question is, one who writes under a false name. One who writes under a false name.
ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, pseudonym, one who writes under a false name. Option D is correct, pseudonym. One who does not believe in marriage. One who does not believe in marriage. Option B is correct, misogynist. Misogynist, someone who hates or avoids marriage. Option B is correct. Next question is a place where dead bodies are kept. A place where dead bodies are kept for identification. Option C is correct, mortuary. A place where dead bodies are kept for identification, mortuary. Next question is a person who is very selective in eating. A person who is very selective in eating. Foodie, greedy. Option D is correct, epicure. Epicure. A person who is very selective in eating, epicure. Option D is correct. Next question is the study of human society. A study of human society, psychology, anthropology, sociology, philosophy. Option C is correct, sociology. A study of human society is sociology. Next question is one who is addicted to alcohol. One who is addicted to alcohol. So option C is correct, alcoholic. Next question is choose the correctly spelled word. स्पेलिंग टेस्ट है, तो स्पेलिंग टेस्ट में आप लोग क्या करेगा, अगर कोई एक वर्ड दिया हुआ है उसको आप चार ऑप्शन को ना देख के खुद लिखिएगा पहले उस वर्ड को, बाद में उसके साथ सिलेक्ट करिएगा कौन सा करेक्ट है. तो चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सेपरेट वाला है तो उसको मैं फिर एक बार लिख देता हूँ अपनी मर्जी से. सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट. ऑप्शन सेपरेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेपरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट दिया हुआ है एकोमोडेशन. तो पहले मैं खुद लिख देता हूँ चार ऑप्शन को ना देख के. एकोमोडेशन, ACCO, एकोमोडेशन. एकोमोडेशन. ऑप्शन दिया हुआ है ACCO और DATI. ऑप्शन सी इज करेक्ट, एकोमोडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिटी. कमिटी को अगर लिखेंगे COMMITTE, कमिटी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, COMMITTE, कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग. occurrence. occurrence, OCCURRENCE, occurrence. ऑप्शन बी इज करेक्ट, OCCURRENCE, occurrence. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द करेक्ट स्पेलिंग. तो रिसीव. रिसीव को अगर लिखेंगे तो RECEIBE, रिसीव. ऑप्शन बी इज करेक्ट, RECEIBE, रिसीव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टली स्पेल वर्ड. तो प्रीविलेज. प्रीविलेज इसको अगर लिखे तो आएगा PRI, प्रीविलेज. प्रीविलेज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, PRIBILEG, प्रीविलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्पेलिंग. तो एम्ब्रेस. एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, EMBARRASS, एम्ब्रेस. ऑप्शन सी इज करेक्ट, EMBARRASS, एम्ब्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द स्पेलिंग. तो ग्रीफ. ग्रीफ को अगर लिखेंगे तो GRIEF, ग्रीफ. GRIEF, ग्रीफ. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रीफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेसेसरी. NECESSARY, नेसेसरी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, NECESSARY, नेसेसरी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग. फैसिलिटी. फैसिलिटी को अगर लिखे मैं खुद से FACILITY, फैसिलिटी. फैसिलिटी. ऑप्शन बी इज करेक्ट, फैसिलिटी. तो ये था टोटल 100 क्वेश्चन. तो आप लोग देखिएगा आप लोगों का कितना करेक्ट हुआ है. तो स्पेसिफिक चैप्टर से मैं क्वेश्चन उठाया है, सब चैप्टर से नहीं. जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आ सकता है, तो वहाँ से उठाया क्वेश्चन. नेक्स्ट और एक मॉक टेस्ट में दूसरा और चैप्टर से उठाएंगे क्वेश्चन.
So thanks for watching.